ने सख्त कार्रवाई की, उसके बाद इसको ईओडब्ल्यू के ऑफिसर को पूछा गया, फिर अब जो है आज आई थिंक 18 जनवरी को जो हियरिंग होगी उस दिन पता चलेगा कि इन्होंने फिर से लिस्ट दी या नहीं दी है। तो कितना बड़ा गलत कर रहे थे ये लोग। ये फौरन ही मंगा के दे दिया था उससे जज ने, बोला अभी इसी वक्त दो, क्योंकि वो आजम साहब नए आए थे तो उनको नहीं मालूम थी। तो उसकी तमन्ना आके बोल रही थी कि हमको लिस्ट नहीं मिली, उसने फौरन ऑर्डर किया और 15-20 मिनट के अंदर ही उसको तक पूरा एसएफआईओ की लिस्ट और बाद में यहाँ की लिस्ट, सेशन कोर्ट की यूडब्ल्यू की लिस्ट, वो पूरा उनके हाथ में दे दिए है। देने के बाद में वो सब मचमच कर रहा था, ये हुआ वो हुआ ये हुआ वो हुआ, बहुत बोल रहा था वो। तो इसको बोले कि तुम लोग अभी 7 एक्सक्यूज को, अभी हमारी मांग सिर्फ यही है, वो सातों को लेकर आओ, क्यों नहीं ला रहे, अभी ये हमारी मांग है, हम इंशाल्लाह वो काम करेंगे। जितने भी लोग सुन रहे इसके लिए दुआ करो। जो हम ये बोल रहे हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी उसने खरीदी है सलीम अंसारी के जरिए, कहाँ कहाँ खरीदी है उनको ला के अरेस्ट करो और उनके उगलाओ। बस हमारी अभी यही हमारी है जी, यही बोलेंगे जैसे आपको कि इनको लेकर आओ, बस खत्म। और आज का कोर्ट का फैसला देखते क्या है, इंशाल्लाह अल्लाह खैर का मामला करे हमारे साथ में, अल्लाह उनकी जबान में, जज की जबान में हमारे दर्द की दास्तान दिल में आए और हमारा है ना ये फैसला सही फैसला करे। बस जज तो बहुत अच्छे माशाल्लाह दे रहे, ऑर्डर अच्छा दे रहे, आज भी दे, नहीं मेरी यही दुआ है बस हम सबकी परेशानियां दूर करें। अभी 55 चल रहा है, 2 ही नंबर बाकी है ताहिरा पा, दुआ करिए और सब लोगों से भी गुजारिश है कि दुआ करें आज की आज अच्छा फैसला हो जाए। और कैसे भी करके अगर ईडी अगर प्रॉपर्टी सारे प्रॉपर्टी बेचने के लिए लिस्ट डाल देगी तो अच्छा रहेगा। ये नौहरा शेख तो देगी नहीं, ये 2-2 करके टाइम बर्बाद करेगी। मुझे लग रहा है आज भी कोई नई चाल लेके आएगी वो, ऐसा लग रहा है। लेकर आएंगी, लेकिन अगर वो चाहती ना सही तरीके से इसकी लाइफ गुजारे मर्द के साथ में, 5वें मर्द के साथ में, और अपने बच्चों की जिंदगी बचाना चाहती है, सही तरीके से हमारा हराम का पैसा उन लोगों को खिलाना चाहती है, तो उसको ये काम आज की तारीख में कर देना चाहिए। जी जी जी, नहीं पूरा पैसा जमा कर देगी तो उसी की भलाई है ना। हाँ बराबर है, भलाई है, वही बोल रही ना, अपने 5वें मर्द के साथ में रहकर अपनी लाइफ को एंजॉय करे, अपने बच्चों को एंजॉय करवाए वो जिंदगी में हमारे पैसों से जी जी जो बच जाता है। नहीं में लगाने के बाद में प्रॉपर्टी खरीदी, किसने क्यों नहीं आवाज उठाया आज तक के ये बात के लिए, क्यों नहीं आवाज उठाया जी। नहीं ताहिरा भाई, एक और एक बात है, आपका एक ऑडियो ग्रुप में लगा हुआ था, चलो बात आई प्रॉपर्टी की, ये 1000 करोड़ का मामला क्या है? ये 1000 करोड़ का मामला देखो, ये बात है ना हुई थी, बोले थे, तो फिर भी मैं सोची ये कि ना मेरे से कुछ बोलने बताने में कुछ गलती हो गई, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और मेरी भी जबान चमड़े की है, तो मैंने उस बात के लिए सॉरी बोल दी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिया बहने और आपने दोनों प्रॉपर जिनकी रिकॉर्डिंग डाल दिए, अभी भी इन लोगों की आग नहीं खुलती है, तो भाई जो करना है वो करो, हमने बता दिए, हमने बोल दिए। और मैं ना मेरी गवाही मांग रहे थे ये कि हमारे को प्रूफ दो, मैंने प्रूफ दे दी। अभी भी नॉन कंप्लेंटर और कंप्लेंटर ये सब अपनी इस बातों पे गौर करो, क्या सच्चाई है और क्या नहीं, बस मैं इतना ही बोलूंगी और इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगी। बस जी 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 जो जिसके दिल में है, जो अपने नामे अमाल में ना सब कुछ अच्छाई और बुराई खरीद कर जाना चाहता है, तो वो शौक से खरीद ले, उसके लिए हम कुछ नहीं रोकेंगे इन लोगों को। अभी 56 चल रहा है ताहिरा पर, चलिए अभी मैं कट कर देता हूँ, नेक्स्ट हमारा ही नंबर है। चलिए अल्लाह हाफिज़। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, ताहिरा पा से बात हुई है अभी, चलिए अभी मैं कानों में ढक्कन नहीं डालना है, 56 चल रहा है, ठीक है। अभी सब लोग नेक्स्ट हमारा ही नंबर है, नेक्स्ट हियरिंग हमारा ही है इंशाल्लाह, नेक्स्ट हमारा ही आएगा। तो अभी मैं इसको ऑन कर देता हूँ यहाँ से, कुछ ही देर में हमारा शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह, थोड़ी देर में शुरू होगा। 56 है अभी, नेक्स्ट हियरिंग हमारा ही है इंशाल्लाह। आ गया हमारा केस, आ गया भाई। Yes. Let me ask over this matter. What are the developments? Let me What has happened? Well, 2 properties are put to auction. The auction is happening on the 23rd of January. That's number 1. Yes, Malak, this 23rd. What is the offset price fixed? For the one property, she had claimed 90 crores. The second property, she claims 120. The average price which we have got is 53 crores and 50 crores.
You already issued the auction notice? Yes, my lords. That was issued on 19th of December. Have you received any My lords, the period for receiving offers? is 16th to 18th January. The agreement by the Enforcement Department is entered into with MSTC, which is the nodal organization for the Government of India, which conducts all these auctions. So they have received certain auctions, my lord. On the 23rd, अभी हीरा की hearing चालू है. because the time is from morning 10 o'clock to evening 4 o'clock. On the 20th, How did you determine this offset price? well, it's by the government valuators, 3 different government valuators. There was a difference, but we have taken them. So, what are these properties? They are some. Yes, Manoj. One, Lord may recall, she had submitted 3 properties. One was a tower property, one was independent plots, one was another corporation where she was operating. There are people occupying this property. No, Manoj. It's a vacant property. 2 are vacant, my lord. The third one, there are already encumbrances, so we didn't take into account. Your lordship said you first auctioned these 2 properties. That Okay. report is also on record. So these 2 properties, Yes, Manoj. in one, the upset price is fixed at 53, Yes, Manoj. and the other one, Lord, I'll give the exact prices, my lords. Your lordships has that report which we had filed last time. If I will. 55. Yes. Okay. And according to her, this 53 should be, Well, 120 crores is what she claims. and 55 should be 90 crores. my lord. 90. You have a buyer for 120 and 90? Lordship, in fact, one of the government valuers has also valued the property at 61 and 77. Yes. So they have taken the average with another valuer who's really undervalued the property, which is why the value has come out to be so much. Fine. So, what do you have to say? Let it be put to auction and recover the price, right? Yes, that's one So, part. 23rd January, you proceed. Yes. If you are successful, good enough. Yes, Manoj. If you are unsuccessful, if nobody comes forward, Yes. then we'll have to think Well, of there are something. 2 more things which I must surprise your lordships. My lords. By an order dated August 24, 23rd August 24, your lordships had also directed her to mention the other properties which are unencumbered, and she undertook to do the same. She has not given. Till date, she has not done the So same. that's not true, Mother. That's not true. May I We've given a list. May I complete? May I complete? What they say is that list is already with us. With That list is already with us. us means? The list that we have given, With them. they say that is already with us. Okay. What is the problem if you give a fresh list to her? Prepare a fresh list. Well, I don't mind, Mother. Give it to them. The details are all in the list already, Mother. Because what But we'll has give it a fresh. No issue. May I submit, my lords? And your lordships directed for her to submit in August and thereafter in November. We had also written a mail. In the mail, she replies with a provisional attachment order. Look, this is what you've already attached. We said, Okay. We are telling her she will furnish a fresh list Yes. of all those properties May I- which may I according just say to one- her are That's unencumbered. good. unencumbered. May I just say one more thing? Because she had not replied, neither furnished, the ED had already identified some more properties which they have attached on the 7th news of है, January. Those properties, my instructions are that If besides- you have already attached, yes, you furnish the details of we have. In fact, and you They can haven't. put those properties also to yes, us. We have no problems. yes, my lords. Take down. Third, my lords, just one more. Uh-huh. On the very said order on 11th of November, your lordships has also told her to deposit 25 crores. She still has one more month to go by February. She is not? She is not, but she has time. We'll to- remind her. We'll Yes. remind Well, her. may I just mention, since he's mentioned this, Uh, whereas we get people to deposit 15 crores, 20 crores, ED rings them up. Why are you? No, that- Why? I am telling you. This is what we have had 3 people like that where they call. What, because the deposit is to be made, they get to know. They say, "Why are you doing this?" you Let them make keep Please tell them, Malas, Mr. not Venkatesh, interfere. keep collecting the money. That's We have correct. never said no. They've never. I'm telling you. Much Why would as we you make a can, false statement? so that That's the endeavor, my lords. That's the endeavor. we have heard Mr. Kapil Sibal, learned senior counsel, appearing for the, what do we say? For the petition. For the petitioner. And Mr. Venkatesh, the learned counsel, appearing for the enforcement department. So Venkatesh pointed out that the department has issued 2 auction notices. Yes, my lords. Dated 2 auction. 2 auctions. My lords, 2 properties, 1 auction. Mr. Venkatesh pointed out that the department will be putting 2 properties to auction on 23rd of January 2025. As regards, sorry,
The upset price fixed for the two properties is rupees 53 crore and rupees 55 crore respectively. Full point. Let us await for the outcome of the auction proceedings. If someone offers the bid, well and good. Otherwise, something else will have to be chalked out. Full point. The second thing he pointed out is that the petitioner has yet to deposit rupees 25 crore as directed by this court. She still has about 1 month's time to deposit this amount. In view of specific direction passed by this court, the petitioner shall deposit this amount within the stipulated period. The third thing which Mr. Venkatesh pointed out is that the petitioner has yet to furnish a list of other properties which, according to her, are free of all encumbrances and there is no charge of any nature. In this regard, Mr. Sybil responded saying that such list has already been provided to the department. However, let a fresh list of such properties be furnished by the petitioner to the ED within a period of 1 week from today. First point. 1 week. Provide a list of properties. What else? That's what, may I say, your lordship use the word other. It should not mean other than ones that are attached and are unencumbered. This is what they are interpreting it as. They say what they have attached are also unencumbered. Whatever you have today, Yes, over and above the two properties which they are going to put that's to right. So auction. it should not be If limited. there are Correct. other properties, That's correct. you furnish the details. That's Mr. Venkatesh Very in the good, last very good. pointed out that during the interregnum period, the ED has been able to attach few more properties. Yes. Full point. If the attachment has already been undertaken and there is no other problem, then it is open for the ED to put such properties also to auction in accordance with law. Well, they have not given us details of the property. However, we ask the enforcement department to furnish details of all those properties said to have been attached May I just say, to the petitioner. the attachment order, the petitioner is a party, it's communicated to her, I'm carrying the extra copy. Give it to her. I'll give it. Right? Yes. So now 23rd January. Now 89, item 89, Millers, we have a buyer for the earlier provisional attachment, Millers. There's a showroom 4, 5, and 6, Millers. We should be allowed to go ahead, Millers, and sell it and deposit the money. Item 18. What is Item this, 89. Mr. Venkatesh? Item 89. Item 89 is Payroll. of the previous Attachment order. attachment order. Well, let's- 89, we have a buyer for showrooms 4, 5, and 6. I'll take instructions, my lord. I'll take Just a instructions. Mr. Sybil pointed out that insofar as property, Item 89 of the provisional attachment order, previous provisional attachment order. एक minute, क्या लिखा आपने? Mr. Kapil pointed out That the property at serial number 89 in the provisional Original- attachment order My lord, may I write the date of 1816-8, dated 16/8 2019. 2019 is free of all encumbrances and the petitioner has a buyer Yes, for showrooms 4, 5, and 6. for more particularly for showrooms numbers 4, 5, and 6. for showroom numbers 4, 5, 4, and 6. 5 and 6 respectively on the ground, situated on the ground floor. Correct. Let the details of these properties be shared with the enforcement department. Correct. If the petitioner has a buyer, we permit her to sell these 3 shops and deposit the sale proceeds with the enforcement department. Keep your Full point. Post this matter now and to report further progress after 4 weeks. right. Because now the passport, they said we had 2 passports, we have only 1. Miller. So, Whether that's now been deposited. It was already sent. Already okay, sent, yeah. anything else? Grateful. Keep your So today is which day? 15th and 23rd.
So you may put it on 23rd. And After that, 1 month is over, Malas, for the deposit. That be the best, so that we deposit the money. 25 crores are to be deposited. yes. Keep it on 5th of March 2020. May I seek one? Yes. Since they already have a buyer, the lordships may also say that the sale proceed may be completed by the next date of the hearing, so that money can also come in. Let them If the We have said, yes, permit them to sell it. They will furnish you with the details also. Yeah. You can keep a watch on that transaction Yes. and then take back. Deeply of that. 50? Yes. मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, अभी हियरिंग कंप्लीट हो चुकी है और 5 मार्च 2025 का डेट दिया गया है। ये थोड़ा सा जो है सही नहीं है, मार्च को Yes, दे Mr. दिया गया है। Pardigan. हम सोच रहे थे कि ये फरवरी में दिया जाएगा। The issues with regard to my claim for the ये थोड़ा सा जो है ठीक से नहीं हुआ है, मुझे लग रहा है। देखेंगे क्या होता है, बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ठीक है। ठीक है, इंशाल्लाह देखेंगे क्या होता है करके। अभी केस ख़त्म हो चुका है और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। इंशाल्लाह शाम को मैं एक गूगल मीट की लाइव प्रोग्राम रखूंगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। जो लोग भी हिस्सा लेना चाहते हैं वो लोग प्लीज़ हिस्सा लें। इंशाल्लाह आज शाम को 8:30 बजे एक हीरा गोल्ड का लाइव सेशन होगा, जब एक गूगल मीट की लिंक दी जाएगी, ग्रुपों में और चैट बॉक्स में भी शेयर किया जाएगा। वहाँ पे आज की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग की डिटेल्स बात उसके ऊपर चर्चा होगी। जो भी शामिल होना चाहते हैं वो शेयर इंशाल्लाह करेंगे। अब जो है देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें लग रहा था कि 11 फरवरी तक ये केस ख़त्म हो जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये मार्च 5 तारीख का डेट दिया गया है। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, नॉन कंप्लेनर से स्पेशली खासकर आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि देखिए अभी जो हो रहा है ना, ये ठीक नहीं है। ये मुझे कहीं ना कहीं तो इसमें गड़बड़ लग रही है। ठीक है, तो इसलिए हम लोगों को क्या है कि अभी वकील रखने की बात आगे बढ़ा देनी चाहिए और वकील रख लेना चाहिए और हमें और देरी नहीं करना चाहिए। कौन सी डेट तक हम तारीख पे तारीख आती जा रही है, तारीख पे तारीख। अभी नया खेल खेल रही है हेरा शेख ने कि वो कुछ शोरूम्स के 3 शोरूम्स का बायर है बोल रही है। अब नया बायर का कहानी शुरू कर दिया, इसने अपना खेल शुरू कर दिया। अब 5 तारीख मार्च को क्यों डेट दिया गया? जज साहब अगर 11 फरवरी का देते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन इन्होंने 5 मार्च का दे दिया है। ये भी कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए फिर से एक लंबा चौड़ा डेट मिल गया। अभी देखिए अभी 15 दिन बाकी हैं, उसके बाद फरवरी पूरा महीना 45 डेज और फिर 5 तारीख जो है टोटल 50 दिन इसको जो है हेरा शेख को मिल गए हैं, 50 डेज। कहीं ना कहीं जो है हमें अभी वकील रखना ही पड़ेगा अभी, और हम देरी नहीं कर सकते। फिलहाल मैं जो है इस वीडियो को यहीं पे सेशन को ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह दोबारा से जो है शाम को 8:30 बजे लाइव गूगल मीट की लिंक शेयर की जाएगी और लाइव प्रोग्राम होगा यूट्यूब पर। जो भी हिस्सा लेना चाहते हैं, नॉन कंप्लेनर्स, SFI, वो सब लोगों को वेलकम है। इंशाल्लाह देखेंगे, इंशाल्लाह जो भी करना है इंशाल्लाह हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। चलिए दुआ में याद रखिए और हमारे इस वीडियो को खूब वायरल करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। और रिपोर्टर एक्स न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में भी ज़रूर बताइएगा कि आज की हियरिंग का नतीजा क्या है, क्या ये सही है या गलत है, क्या हमें इनसे इंसाफ मिलेगा या और तारीख पे तारीख ही मिलती रहेगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।